अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। आज हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं। इस डिलिशियस करी डिश में mince is beautifully wrapped around an egg and when you cut in it looks like an almond shaped eye, hence the name Nargisi Koftay. So in this video आप कोफ्ता mince, इसकी wrapping and cooking technique सीखेंगे। मगर ये प्रोटीन एंड फ्लेवर पैक्ड रेसिपी को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड।
ये लीजिए, हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। फर्स्टली हम कोफ्तों को डिश आउट करेंगे और फिर करी पोर करेंगे। जिंजर, चिलीज एंड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे और ब्यूटीफुली कट कोफ्ते से डेकोरेट करेंगे। राइस के साथ सर्व करके टेस्ट करेंगे। Mashallah, mince is cooked and it's beautifully wrapped around the egg, not falling apart at all. Nargisi Koftay ki gravy slightly thick hai and it has an amazing delicious flavor loaded with aroma and juices of the meat and spices. Usually लोग कोफ्तों को पहले फ्राई करते हैं और फिर ग्रेवी में कुक करते हैं, but that drains out all the yummy juices of the meat in the oil which we need for the gravy. तो मेरे कुकिंग मेथड से मीट के juices and flavors are infused in the gravy which enrich the taste of the dish. And while cooking, don't worry about a few cracks on the kofte. It happens because of uneven coating of meat on the egg and that's okay. अगर आप मीट को moisture free prepare करेंगे like I did in this video, तो it will stay on the egg and together they'll taste delicious. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करें, इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।